एक कोथमीर, हल्दी, एक लाल मिर्च पाउडर और तरबूज के बीज और ये नींबू का रस और चिरौंजी, नमक, अदरक लहसुन, ये शाजीरा, पिसी हुई हरी मिर्ची और ये है खड़ा मसाला, तंदूरी चिकन मसाला, एक खसखस और ये है साबित चिकन। और अदरक लहसुन, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, चमचा आंटी का थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा तंदूरी चिकन मसाला, इतना इसको मिक्स करके इस पे लगाना। दही लेंगे, दही एक कटोरा दही, हमने एक कटोरा दही लिया है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, तंदूरी चिकन मसाला, अब हरी मिर्ची पिसी हुई, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा, नमक थोड़ा, और अब कोथिंबीर बारीक कटी हुई, तरबूज के बीज, पेस्ट, खसखस का पेस्ट बनाया,
और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इस मिश्रण को अभी चिकन में भरना है। भर चुके, इसको अब सीना है प्रणीता बेटा, सुई धागा लेके आओ। इसको अपन पैक करेंगे, इसको सिएंगे, मसाला बाहर निकलने ना पाए, इसलिए ऐसा सिएंगे इसको। बेटा दोरा टेला मैं कैसे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा, कैसे सियोगे इसे? अभी मैं दिखाऊंगी ना, ये देखो इस तरह सीना है इसको। तो दादी अब इसका क्या करोगे? अब इसको कुकर में पकाना है। So now our Shabit chicken is ready and you can pair it with any of your favorite drinks such as juice or even a bottle of wine. So the process looks quite complicated, but it's very easy to make. All it takes is step 1, marinate the chicken, step 2, fillings of the chicken, step 3, steam in the cooker, and step 4, ghee roast in kadhai. This is really yummy. हमने जो धागा बांधा था वो हमें निकाल के अंदर की फिलिंग्स के साथ इसको खाना है. So now I'm going to enjoy my Shabit chicken and you guys also make it at home or you're at your friend's place and enjoy this delicious meal. अभी भाई तो खा के आराम करने गए हैं तो आप भी इसे खा के आराम कीजिए. Till then, see ya.